बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्लास है क्लास 12th के लिए ऑफलाइन फिजिकल एजुकेशन क्लास है। जो आज हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूज ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। द वैल्यूज, द डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज दैट आर फाउंडेड बाय द फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज एंड हाउ फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स। फिजिकल एजुकेशन का कैसा कंट्रीब्यूट एंड हाउ मच इट कंट्रीब्यूट्स टू मेक सच काइंड ऑफ वैल्यूज, टू मेक द sympathetic values, to make the moral values, how it inserts much more values to the individuals, to the participants of the games and sports activities, how it increases the tendencies, how it inherits the values, how it increases the values, how the moral values are such as जैसे कि cooperation, self discipline, justice, fear, equality, respect, authority, honesty, self confidence, sympathy, or the values. How physical education contributes to increase such values in an individual, to play games and sports and to participate in different kind of sports activities. These kind of values, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि कॉर्पोरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोग रखना, कॉर्पोरेशन रखना, डिसिप्लिन, गेम्स एंड सपोर्ट्स। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हमें ये सिखाया जाता है, व्हेन वी प्ले एन इंडिविजुअल एक्टिविटी और ए ग्रुप एक्टिविटी, वी फाइंड द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन विच वी फाइंड 10 or 12 प्लेयर्स, 10 या 12 खिलाड़ी होते हैं। हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि हाउ दे शो द डिसिप्लिन अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, how they did show the cooperation of a team, हत्ता कि वो आप एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं होते हैं। मतलब a team represents the different kind of states, different kind of tribes, different kind of castes, cultures and regions के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। बट उस चीज़ को भूल जाते हैं कि we are from the different classes, different tribes, different regions, उस सब को completely भूल जाते हैं। and they show the cooperation, brotherhood और जस्टिस भी, ऑनेस्टी भी दिखाते हैं, सिंपैथी भी दिखाते हैं, इमोशनल। दीज आर द वैल्यूज विच आर इनहेरिटेड, विच आर इंक्रीज्ड बाय आवर डेली एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जब हम ये सब देखते हैं कि दीज थिंग्स इंक्रीजेस the much more values that lies in us increases day by day. How it increases, how these things increases when we are in an activity, when we play the different kind of sports activities, or when we have the different kind of objectives. In order to make physical education much more valuable for the moral values, we have to make the different rules and regulations for the games and sports. गेम्स और सपोर्ट्स में उससे मॉरल वैल्यूज इंक्रीज हो जाते हैं, हम ये बात मानते हैं। वो अगर हम देखेंगे वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेशन, एक दूसरे के साथ रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, इक्वालिटी रखना, सेल्फ रेस्पेक्ट रखना, ये तो है। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वैल्यूज। ये वैल्यूज तो होते हैं सब में, मगर फिजिकल एजुकेशन टीच अस मच मोर अबाउट दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज की ज्यादा हमें इज्जत करना सिखाते हैं, कॉर्पोरेशन ज्यादा सिखाते हैं, हाउ वी कैन बी मच मोर कोऑपरेट, हाउ वी कैन बी मच मोर कोऑर्डिनेशन, ज्यादा कोऑर्डिनेशन कैसे आ जाएगा, इक्वालिटी कैसे, सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे हो, ओबीडियंस कैसे हो जाते हैं, हाउ वी ओबीडियंट कैप्टन एन एम्पायर, मतलब डिसीजन को कैसे हम मानते हैं। These are the values. These values has very importance, and these values increase day by day when we make involvement in physical activity. जब हम physical activities में involvement करते हैं कि ये सब चीजें क्या तो increase हो जाती है day by day. को physical education promotes the moral values in our day to day life. Simply physical education promote करा in moral values, जैसे increase करा day by day moral values. अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि how रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इनइफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, व्हाट इज द रीजन, काज क्या है, व्हाट इज द काज दैट नेग्लेक्ट्स द इनइफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। फिर ये वैल्यूज हम में से क्यों नहीं है, व्हाई देयर आर द लैक ऑफ वैल्यूज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी, इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी जिंदगी में वैल्यूज कम क्यों है, व्हाई। नंबर फर्स्ट, देयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज थ्रू विच वी कैन say that it is by these things it is the ineffective development of values. इन सब चीज़ों से भी ineffective development होती है। अगर हम ये करेंगे इससे effective development, अगर ये करेंगे
अगर हम ऐसे भी देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन इज द रीजन which promotes which makes the effective development of values. But there are the persons, we are the responsible. Why we are the responsible for the ineffective development of the program? The different physical education programs or physical activities promotes, promote करा क्या values, but there are significant reasons why these are ineffective in our day-to-day life. क्यों ये ineffective है? अगर हम पहली बात की जो मैंने यहाँ पे दिखाया नंबर फर्स्ट वाइड गैप बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस, दैट इज नंबर फर्स्ट इज द जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं, जो हमारे कोच होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं फिजिकल एक्टिविटी या कोई गेम सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे मतलब क्या एल्डर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, दे मेक द डिफरेंस. वो कैसे डिफरेंस होते हैं? दे मेक ए डिफरेंस बिटवीन देयर वर्ड्स एंड देयर एक्शन. जो वो कहते हैं वो अपने खुद पे वो अपने लाहेमल नहीं कर सकते. They say that we should be very respectful to our elders, but they did not himself show the respect. वो कहते हैं कि हम we should show the cooperation with others. वो cooperation हमें दूसरों के साथ cooperation होना चाहिए. We should be very sympathetic. हम sympathetic होने चाहिए, मगर खुद वो नहीं होते. This is the reason कि there is a wide gap between our actions and words. जो हम कहते हैं वो तो हम करते नहीं, और जो हम कहते हैं वो तो हम खुद करते हैं. अगर वो हम खुद करते हैं it will be much more. As you know, there is a proverb और भी एक आ जाता है कि action speaks louder than the words. जो हम मतलब क्या करते हैं वो उतना असर नहीं रखते हैं, वो उतना असर नहीं रखते. The much more thing that affects is our actions. जो हम करते हैं it's very useless to be a support person without fair play. Very useless है कि support person का अगर ये fair play नहीं होगा. को मतलब it's very important कि students support persons are influenced by our practices. Then what we say, values are reflected into our day-to-day actions. जो हम दिन भर करते हैं उससे values हमारे reflect होते हैं. So we should not provide any gap between words and actions. जो हम बोलते हैं वो हम खुद भी करना चाहिए. Then there will be the increase in our value. There will be development of our value. Number 2, that's called excessive importance to it. Nowadays आज के दौर में हम क्या देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा much more importance is given to that. Much more importance in a competition is given to the victory. ज्यादा से ज्यादा हमें क्या, we have to win either hook or crook, either this way or that way. Wrong means are adopted. बुरे तरीकों से लोग इस्तेमाल करते हैं कि and they find themselves मतलब क्या victorious, और वो अपने आप को क्या जीतना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं. They did not bear about the values. वो values के बारे में नहीं सोचते हैं, वो values के बारे में नहीं सोचते. Neither they sees how the values did not affect or how did it affect us. They did not think about this. They think also our elders, our coaches, our physios, and also our elders advice as winning. But अगर हम देखेंगे कि winning is not everything for us. It's also about to participate. It's not about to be the winner. It's all about to be the best warriors. So we should utilize our service, but the aim should be to fight well, not to victory. The aim should be to fight well. If we find victorious, that's very good. But excessive importance should not be given. ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कि we use by and hook or crook, by and other means. हम ये सब इस्तेमाल करेंगे फिर जीत हासिल करेंगे. That will not increase the moral value. That will not develop the moral values. These things क्या makes the ineffective development. This is the reason why there is an ineffective development. Number 3, अगर materialist point of view, आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो पीपल्स आर मच मोर मटेरियलिस्टिक. इट्स नॉट अबाउट द सपोर्ट्स पर्सन. ये एथलीट के बारे में ही नहीं, इट्स ऑल्सो अबाउट द कोच, सपोर्ट्स पर्सन. ईच एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फॉर द मनी एंड एवरीथिंग दे वांट्स टू वट एवर वी वांट टू टाइट्स शुड बी द मनी. जो भी हम करेंगे, जहां भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, इट शुड ऑल अबाउट द मनी. द टेंडेंसी इज कॉमन. हम ये बात नहीं करेंगे कि एक ही रुझान में, इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट
all these people is behaviors as they are professional players. They did not concern about their values. Values का वो concern नहीं रखते. They only think about the money, how they gain much more, how they develop much more. And these are the things which we have to look. कि wide gap, जैसे कि gap, there is a distance between our words and our actions. या importance victory को दे देंगे, whether this or that way. या materialistic point of view, money and other things. These are the things that renewed the values. That renewed the values in us. That these things are the important that we should consider in order to make the good development. These are the reasons that makes the ineffective development. Okay, thank you very much.